Hello all, I am Jyoti Kedare. And good morning again. This is Anand Kedare, your host for today's program. We are thrilled to be your host for today's program. First, we wish you all a very happy Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti. Thank you all for taking your time to attend this program. On behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar International Mission Houston, we would like to extend warm welcome to all of you. We are extremely glad to have you all gather here to celebrate Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti in this extraordinary venue. I hope you all like this venue. And today's program is fully loaded with knowledge, quiz, some dance performances, and on top of that, we have invited knowledgeable and great speakers over here, and we'll listen their great thoughts. And not to forget, a delicious food is waiting for you in the lunch also. Yes, so we'll have delicious lunch at the same area where we have snacks now. Uh, I'm pretty sure this will be a very memorable day for all of us who gather here. And Jyoti, do you know where all these guests are coming from? If I am not wrong, उनमें से बहुत सारे ह्यूस्टन से हैं, right? That is partially true. There are majority of Houstonian, but don't forget, most of them are traveling from Austin, Dallas, San Antonio. Really? And, yeah, and on top of that, some are traveling like our guests. They are not even. They are traveling from out of Texas. ओके जो लोग दूसरे सिटी से आए हैं, आई होप उनकी यात्रा सेफ एंड हैप्पी रही होगी और Yeah. आज का वेदर भी बहुत अच्छा है. That's तो true, वेदर that's ने भी true. हमें बहुत साथ दिया है. That's true. Yesterday's weather was pretty bad, and I'm very thankful that today's weather was really nice. And those who travel from outside Houston, I hope your travel was good, safe, happy. और इन मेहमानों को देखकर बहुत खुशी हो रही है. नए नए चेहरे, नए एक्सपीरियंस लेके आए हैं. That's थैंक यू right. वेरी मच. That's right. That's right. I'm absolutely happy to see all of these guests here for this program. Still, who just arrived, I request them to go and have some snacks that is kept at that corner on the table. So you will have a lot of energy to enjoy our program. Jyoti, along with adults, now I can see many more kids here. यस एंड यू नो व्हाट आनंद, इन बच्चों के परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटेड तो बहुत हूँ. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द किड्स. Let me tell you honestly, I'm also so much excited for their performances, to see their performances. And again, on top of this everything, as I mentioned before, we have special guests here. So be ready to have some knowledge, listen some great knowledge from them. और आज के कार्यक्रम में यदि किसी को पार्ट लेना है अपना प्लीज़ नाम नॉमिनेट करें. आई थिंक नॉमिनेशन फॉर्म इज़ देयर. Yeah. So please fill your if you want to speak anything, so Yeah. please So fill that form. Absolutely. So if you have not nominated before through our WhatsApp group, and you want energetic to perform here on this stage, I would request you to please nominate your name there, and we'll take all the performances, those freshly nominated here after our lunch. चलो हम सब कार्यक्रम की शुरुआत जोर से पूरे उल्लास के साथ हमारे उद्धारकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय जयकार के साथ करते हैं. Yes, and if you can also join us, you can just read with us, and let's have that energy built up in this room, in this hall. विश्वरत्न भारत रत्न प्रचंड विद्या पारंगत प्रज्ञा सूर्य हमारे गुरु दिशा दर्शक हमारा अभिमान हमारा स्वाभिमान भारतीय घटना नायक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय.
डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय। That's wonderful. I like the energy. It's a huge energy. अप्रैल 1891 को बहू के मिट्टी में एक बालक ने जन्म लिया। किसी को पता नहीं था कि एक दिन वो बालक भारत भूमि को तेजो सूर्य से बनाएगा। वो बालक अपना सारा जीवन समाज के उपेक्षित और अत्याचारित वर्गों के अधिकारों की आवाज़ बनेगा। वो बालक जो परंपरागत चली आई चातुर्वर्णीय सामाजिक प्रणाली को बदल देगा। वो बालक जो एक दिन मनुस्मृति जैसे भयानक मनवादी विचारों को किताब सही जला देगा। वो बालक उस समय के पिछड़े समाज के मुर्दा दिलों में आग लगा देगा और उस आग को मशाल बनाकर उपेक्षित वर्गों को, महिलाओं को उम्मीद की नई राह दिलाएगा। वो बालक जो इस धरती के सबसे महान और बड़े लोकतंत्र देश की घटना बनाएगा। हमें अभिमान है कि हम ऐसे व्यक्ति को आदर्श मानते हैं जो अगर ये दुनिया में न आते तो हम यहाँ इस पल ऐसी खुली हवा में सांस ना लेते, ना ही हम किसी अच्छे जीवन का आनंद लेते। So, let's come together to honor Dr. Baba Saheb Ambedkar's legacy, to pave the way to a bright future. When we remember Dr. Baba Saheb Ambedkar, we also remember those great personalities, those great people who have a great importance in our lives. Those are Mata Ramai, Mahatma Jyotiba Phule, Mata Savitribai Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj, and in the recent decade, like Kanshiram ji. हम उन सभी महान लोगों को सलाम करते हैं जिनकी वजह से हम पीड़ित नहीं बल्कि शिक्षित हैं। All right, now without taking much time, I would invite all the guests to start to the next program. So now I request Honorable Chief Guest Dr. Rajesh Sampath to offer flowers to Dr. Baba Saheb Ambedkar's photo.